10th class, Assalamu alaikum. In Pakistan Studies class, we have started chapter number 2 and today's topic is Central Asian Republics, Wasti Asiai Riyasatein. This map is going to give us a clear picture of the Central Asian Republics, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, and Azerbaijan. Azerbaijan comes in Asia and Europe. That's why it does not include in Central Asian republics. Background. With the collapse of the Soviet Union in 1991, 5 Central Asian countries gained independence. That is Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, and ताजिकिस्तान। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वस्ती एशिया की 5 रियासतों ने आज़ादी हासिल की एंड दीज 5 स्टेट्स वर मुस्लिम स्टेट्स काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। In this map, we can see the Soviet Union administrative departments before 1998. In this map, all the 5 Central Asian states can be seen in the map of USSR, Union of Soviet Socialist Republics. At the bottom, you can see the orange part is the Kazakhstan, next is Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, and at the end we can see Azerbaijan. This map is going to give us a clear picture of Uzbekistan with the capital of Tashkent. Uzbekistan got independence from the Soviet Union on August 31, 1991. After independence, Pakistan recognized Uzbekistan and made friendly relations with it. The first agreement on aviation between the two countries was signed in 1992 in Karachi. There were other agreements related to economic and trade relations, and that agreement was signed in March 1992. Both the countries have made another agreement to improve energy, trade, banking, and communication sectors. Uzbekistan have the same viewpoint on Kashmir issue. It said that the Kashmir issue should be solved according to the wishes of the Kashmiris, and it should be resolved through the resolutions of United Nations. For the better relations, both the countries' heads visit to each other's country. Uzbekistan 31 अगस्त 1991 में उज़्बेकिस्तान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ दोस्ताना बुनियादों पर हुआ। पहला फ़ज़ाई माहिदा जो उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ वो कराची में 1992 में हुआ। मार्च 1992 में ही इक़्तिसादी, तिजारती और कारोबारी ताल्लुकात के लिए निजी शोबे में माहिदा तय पाया था। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, मवासलात, तवानाई, बैंकारी और सड़कों की तामीर के शोबे में एक दूसरे से तावन करने पर भी इरादे ज़ाहिर किए गए। मसले कश्मीर पर उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान की हमायत करता है कि मसला कश्मीर कश्मीरियों की हक़ ख़ुद इरादियत के मुताबिक और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए और मुख्तलिफ़ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए दोनों ममालिक के सरबराहान एक दूसरे के मुल्कों के दौरे करते रहते हैं। नेक्स्ट इज़
Turkmenistan. We can see its capital, Ashgabat. Turkmenistan got independence from the Soviet Union on October 27, 1991. Both have the ties of common religion, cultural traditions, and history. Office of the PIA, Pakistan International Airline, and NBP, National Bank of Pakistan, were created in Ashgabat, the capital of Turkmenistan. Pakistan made an agreement with Turkmenistan on the purchase of natural gas in 1991. For the promotion of cooperation, an agreement and joint commission was formed in 1999. तुर्कमानिस्तान ने 27 अक्टूबर 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की थी। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका समाजी, माशी और तहज़ीबी खसूसियात हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने PIA और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की शाखें तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशगाबाद में खोली थीं। इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान से कुदरती गैस ख़रीदने के लिए एक मुआहदा किया जो सितंबर 1991 में तय पाया था। मुश्तरका कमीशन के क़याम का सिलसिला 1999 में शुरू किया गया ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ़ तरक्याती मंसूबों पर काम किया जा सके। In this map, we can see Kazakhstan with the capital Almaty. On 16 December 1991, Kazakhstan got independence from Soviet Union. It is the largest Muslim country of the Muslim world. The Kazakh president visited Pakistan in 1992, and there was an agreement in the fields of science and technology, trade, economy, and communication. Another agreement was signed on the transit trade between Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and China in 1998. Kazakhstan. 16 दिसंबर 1991 को काज़ाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की थी। आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क काज़ाकिस्तान। काज़ाकिस्तान के सदर ने 1992 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें दीगर मुआहदों के अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी, तिजारत, मईशत और ज़राए आमदोरफ्त के शोबों में ताउन के मुआहदे भी किए गए थे। इसके अलावा 1998 में पाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान एंड काज़ाकिस्तान के दरमियान राहदारी तिजारत का मुआहदा तय पाया, जिसके ज़रिए चारों ममालिक पाकिस्तान की बंदरगाहें इस्तेमाल कर सकेंगे। This map shows Kyrgyzstan with the capital Bishkek. Kyrgyzstan got independence from Soviet Union in August 31st, 1991. For the promotion of economic and cultural relations, there was an agreement which was signed in 1991. Another agreement was also signed to control the drug trafficking, which has negative effects on the young population. On upgrading the Karakoram Highway, an agreement was made in 1994 between Pakistan, China, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. That agreement was related with the extension of Karakoram Highway to the capital Almaty and the Kyrgyz capital Bishkek. The first diplomatic missions on both sides were started in 1994. Kyrgyzstan. 31 अगस्त 1991 में
کرغزستان نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کی۔ 1991 میں پاکستان اور کرغزستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے ذریعے اقتصادی اور ثقافتی تعاون کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ ایک اور معاہدے کے ذریعے دونوں ممالک میں منشیات پر قابو پانے کا سمجھوتا طے پایا، جس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کمزور ہو رہی تھی۔ 1994 میں پاکستان، چین، قازقستان اور کرغزستان کے درمیان شاہراہ ریشم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کا معاہدہ کیا گیا۔ اس کے لیے شاہراہ قراقرم جو پاکستان اور چین کے درمیان ایک تجارتی شاہراہ ہے، اسے قازقستان کے دارالحکومت الماتی اور کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک تک وسعت دینے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ 1994 میں دونوں ممالک میں سفارت خانے تعمیر کیے گئے اور اس فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان مزید تعلقات بہتر ہوں گے۔ In this map, we can see the transit trade, which starts from Islamabad and it is passing through Kashgar, then Bishkek and Almaty. This map shows Tajikistan with the capital Dushanbe. Tajikistan got independence from Soviet Union on September 9, 1991. Among the Central Asian republics, Tajikistan is the closest neighboring country of Pakistan. And Tajikistan is separated from Pakistan by Wakhan, which is a narrow strip of Afghanistan. Both the countries have common religious and cultural traditions. Pakistan made an agreement with Tajikistan to purchase the supply of electric power in January 1992. Another agreement was made on the air transport, through which both the countries can use the airports and air transport. Pakistan also gave the trade transit facility to Tajikistan, so Tajikistan can carry its trade through Pakistan. An agreement is also made in the fields of science and technology, trade and economic affairs in 1994 to improve all these sectors. تاجکستان نے سوویت یونین سے 9 سپٹمبر 1991 میں آزادی حاصل کی۔ وسطی ایشیائی ریاستوں میں پاکستان کے نزدیک ترین ہمسایہ ملک تاجکستان کو افغانستان کا ایک علاقہ واخان پاکستان سے جدا کرتا ہے۔ بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان نے تاجکستان سے جنوری 1992 میں ایک معاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک میں 2 طرفہ پروازوں کا معاہدہ بھی کیا گیا تھا۔ پاکستان نے تاجکستان کو تجارت کی غرض سے راہداری کی سہولت فراہم کی تھی۔ اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی، اقتصادی اور تجارتی تعاون کا معاہدہ بھی دونوں ممالک میں طے پایا تھا۔ اینڈ تھینک یو۔